Start. Hello kiddos, I hope you all are doing well. Yes, are you all ready for the math session? Fine. So in the previous session we studied how you represent the decimals on the number line, and we also studied how to read the decimal. Yes, now today we are going to see the writing of the decimals. Yes, once you know the place value chart, you can write the decimal and represent it properly on the place value chart. Fine. So we will have our place value chart first. That says decimal के right side it starts from ones tens और units tens, और decimal के left side पे कैसे शुरू होगा? Tenth, hundredth. Yes, there is no ones here. Ones, tenth, hundred ऐसा नहीं है. Tenth और hundredth है. Clear? Now any number you can write. You have to write the number name of the decimal number. Fine. So you can have two ways. कौन कौन से वे है? Two ways. In the first way you write decimal को आप क्या बोलोगे? Point. और in the second way में you will write decimal as and. A-N-D and. Okay. Let's revise and then we will solve the exercise 9.2 all together. So I want you to have your textbook with you. See the video and then solve it on your own. Clear? I'm going to explain you everything from the exercise 9.2. Fine. So let's name a number that is 408.1. Now point के आगे का तो आपको वैसे ही लिखना है जैसे आप लिखा करते थे. You already know to write. Yes. So what is this? How you will write this? You will write 408. एंड देन डेसिमल की जगह आप क्या लिखोगे? पॉइंट, एंड वन है तो वन लिखोगे. यस, सो दिस इज द वन फर्स्ट नेम ऑफ द नंबर. दिस इज द वन वे. 408.1 जहां पे मैम ने पॉइंट यूज किया है. क्लियर? नाउ यू विल यूज एंड. व्हाट यू विल यूज? एंड. अब डेसिमल के पहले का तो आपको आता ही है, सो यू विल राइट 408 एंड देन पॉइंट की जगह पे आप क्या लिखोगे? एंड. अब ये क्या है? 1. So you will write 1. And what is the place value of 1? The place value of the number after the decimal. क्या लिखा है यहाँ पे देखो. See the picture. 10th लिखा है. So आप क्या लिखोगे? 1 और 10th. अब मैम आपको ट्रिक बताती है. बराबर? आप जब भी नंबर आएगा आपके पास, what you will do, you know, decimal के पहले वाला तो you know very easily that you will write. Then decimal के लिए यू विल राइट पॉइंट और यू विल राइट एंड. क्लियर? दो ऑप्शन है आपके पास. नाउ एक में तो आपको सिंपल 1 लिखना है, जो भी नंबर है वही लिखना है, और थोड़ा सा जो डिफिकल्ट है वो है सेकेंड वे. ओके, सो दैट इज 1. अगेन यू विल राइट 1, और जो भी लास्ट नंबर है उसकी प्लेस वैल्यू क्या है? ये लास्ट नंबर है 1, उसकी प्लेस वैल्यू क्या है? 10th. तो आपको पीछे 10th लिख देना है. Clear? Okay, let's take other example, that is 408.04. Now see the difference. यहाँ पे 0.1 है और यहाँ पे 2 डिजिट है. मतलब लास्ट वाला नंबर कौन सी प्लेस पे है? अपना 100th प्लेस पे. तो मैम क्या करेंगे? 0 4 100th. Yes? Okay. So let's take the first way. So 408 तो you know 408. पॉइंट की जगह पे पॉइंट, 0 एंड 4. दिस इज द फर्स्ट वे, दैट इज वेरी इजी. सेकेंड वे में 408 आपको आता है, पॉइंट की जगह पे एंड लिखा है मैम ने. 4, अब 0 4 है, ठीक है, तो 0 नहीं लिखना है, खाली 4, और 4 किसकी प्लेस पे है? 100th की प्लेस पे. तो आप क्या लिखोगे? 400th. ओके, सो किड्स हियर देयर इज अ स्पेलिंग मिस्टेक. आई एम सॉरी फॉर दैट. ओके, this is 400th. Clear? Now we are taking other example, that is this one. Okay, so the first way to write it is before the decimal point you will manage, yes, that is 2006, और decimal point की जगह point लिखोगे and then 20. Fine. Now the second way to write is 2006 and 20, because 20 is 20, so 20 and 0 is in which place? 100th place, so 100th. Now see kids, whenever you write point, no, there you have to write 20.
and whenever you write and, then you have to write 20. Clear? 20 नहीं लिखना है, यहाँ पे 20 लिखना है. See the difference between the two ways to write by your own. Clear? Now in the previous example we have taken 10th place का एक example, then we have taken 100th place का example, and here also we have taken 100th place का example, and now we are having 1000th place का example. Okay, so all the varieties I have covered in this video. Fine. So write, the first way to write this number is 571, that you know. point पे point आएगा तो आप कैसे लिखोगे? 872. क्लियर? अब अगर आपको 872 लिखना है तो आपको एंड वाला नंबर नेम लिखना है, दैट इज 571 एंड 872. फिर आपको क्या करना है? ये 2 कौन सी जगह पे है? इट इज इन द थाउजेंड्स प्लेस. यस, सो 872,000 ऐसे लिखना है. क्लियर? See the difference and mark it on your, matlab observe it on your own self. Fine. Let's take other example. 0.52. Okay. Now how you will write it in the first way? It is 0.5 and 2. Okay, 5 2. And then next way is what? You will write 5200th. Okay, 5200th. This is the second way to write. Clear? Now this is the number wherein there is no whole part. 0 से शुरू होता है, 0 point से शुरू होता है. Clear? Fine. So let's start exercise 9.2. Now, kids, I want to make you the first part, the first way of writing the number name very thorough. So what we will do is the first वाला जो है ना, write the following in words, that we will write everything in point. Okay. See. Now the first question is this. Okay, so how you will write it in the number names? You will have 241. Yes, then decimal की जगह point, and then 675. Easy? Yes. The second one is 421.05. Okay. The third one is 162.6. तो आप कैसे लिखोगे? वैसे ही 162.6. Okay, these are all the examples of point. Point matlab the first way to write. Clear? And the second part we will say you have to write the numbers. Okay, number name is given, आपको numbers लिखने हैं. So what is that? 2006. So and 20/100th. तो आप कैसे लिखोगे? 2006 and की जगह पे decimal point और 20 और 100th है, because 20 is 0 is in the 100th place, so this is 20/100th. Clear? Now the next one, that is 720.40. तो ये तो easy है, point वाला है तो easy है. So you will write 720, then point and then 40. Clear? Now the last one, that is 9,876 and 5/10th. 5/10th मतलब 5 कौन सी जगह पे होगा? 10th की जगह पे होगा. Clear? So you will write 9,876 point, that is decimal point, and 5, because 5 is in the 10th place. Clear with it? Okay. Now we'll move on to the match the following. Okay, so we'll have the first example. It says 408 and 1/10th. So 408 and की जगह पे decimal point और 1 की जगह पे 1 और 10th क्यों लिखा है यहाँ पे? Because 1 is in the 10th place. Clear? Now 6,000.09. This is easy, point वाला है. So 6,000 point की जगह पे point और 0 की जगह पे 0, 9 की जगह पे 9. The third one, 1,005.366. So this is also easy. 1,005 लिखो, point की जगह पे decimal point and 366. So you will have 366. Clear? Now the next example is 7,638
0.643. So it's simple, point wala hai. So 6630 you will write 38. Itna to you know. Point की जगह पे decimal point and 643 तो 643. Clear? Now the next example is 324.53. Point wala it's easy. So 324 and then point for the decimal point and 53. So that's all for the today's session, students. For your homework, you have to complete exercise 9.2. And with this, we have completed the decimal chapter, half chapter we have completed. Okay, the last exercise, that is 9.3, is only remaining, but that we will cover it after Diwali vacation. Yes, so you are all excited to have Diwali vacation, and we are even I am excited to celebrate Diwali this year. Okay, so wishing you a very happy Diwali. Play safe and enjoy your Diwali vacation. Bye.